Today video is about the design of 350 watt solar system for home and shops। दोस्तों आज की वीडियो 350 वाट सोलर सिस्टम के बारे में जो घर या दुकानों में यूज किया जा सकता है। So first of all we will see the calculation of 350 watt solar system। All calculation we are considering here two fans and one fan usually we know it's 80 watts, so it's 160 watt for two fan, two LED lights, these are 25 watt per light, so it's for 50 watt, one tube light which is 40 watt and two LED TV which are 1000 watts. So total load for 350 watt for our home or shop. So next step is how to calculate the inverter size, battery size and solar size। दोस्तों 350 वाट सोलर सिस्टम के लिए हमने सबसे पहले लोड को कैलकुलेट करना है। हमारे पास दो फैन हैं और हर फैन 80 वाट का है और ये टोटल 160 वाट के हैं। दो LED बल्ब 50 वाट के हैं, एक ट्यूब लाइट 40 वाट की है, दो LED TV 100 वाट के हैं और टोटल हमारा लोड 350 वाट का है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने UPS या इन्वर्टर, बैटरी और सोलर प्लेट को डिजाइन करना है। UPS or inverter calculation. Total load as we calculated is 350 watt. Now the next step is DC current required. So as we know, power is equal to voltage into ampere. So we know we have a load of 350 volt and we are considering here 12 volt battery system. So we have to calculate our current by assuming 12 volt system. So the current here which is calculated here is almost 29 ampere. So UPS or inverter which we are considering here 800 to 1000 watt because it's for our future calculation, because maybe in future we can add more plates, so it's effective for future calculation too, so that we do not need to buy the inverter again and again। Now अगला स्टेप है हमारी इन्वर्टर की कैलकुलेशन का। जैसे हमें पता है कि लोड 350 वाट का है, सो 350 वाट के लिए हम इन्वर्टर 800 वाट से 1000 वाट का लेंगे। ये हम मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि अगर हम और ज़्यादा सोलर प्ले लगा सकें तो सेम इन्वर्टर या UPS उसे सपोर्ट कर सके। और कितना करंट रिक्वायर है इस सिस्टम के लिए, पावर का फार्मूला जैसे हमें पता है वोल्टेज इंटू एम्पियर। सो पावर हमारे पास 350 वोल्ट की है, वोल्टेज 12 वोल्ट है क्योंकि हमारा सिस्टम सिंगल बैटरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम 12 वोल्ट का सिस्टम कंसीडर करेंगे। और टोटल एम्पियर बाय यूजिंग दीज कैलकुलेशन वी कैन डू इट। सो एम्पियर इज 29 एम्पियर। Now next step is battery size selection. We know the formula for battery system is watt into ampere, watt into hour divided by volt. So total load multiplied by backup time, मतलब हम कितने घंटे के लिए उसे रन करना चाहते हैं, for how many hours we want to run the system, divided by battery voltage. So here in this case in total load of our system is 350 watt and we are considering 6 hour backup system. So 6 hour divided by 12 because we are considering 12 volt system. So the battery size in this case is 175 ampere hour। दोस्तों यहाँ पे हम बैटरी का साइज कैलकुलेट करेंगे जिसका फार्मूला है टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। हमें पता है कि हमारा लोड 350 वाट है और हमने अज्यूम किया है कि हमने 6 घंटे के लिए सिस्टम को चलाना है। सो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे डिवाइड बाय 12 बिकॉज हमारे लिए 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम हम ले रहे हैं, सिंगल बैटरी सिस्टम। सो बैटरी का साइज हमारे इस केस में 175 एम्पियर आवर का आएगा। Next calculation is battery charging current. How much current is required to charge the battery system? So ये हम जनरल फार्मूला है
battery size divided by 10, 175 divided by 10, 17.5 ampere. We can't charge the battery too fast because it's very dangerous for the battery life. That's why we considering this formula to charge the battery system slowly and slowly. दोस्तों अगले कैलकुलेशन हम करेंगे बैटरी चार्जिंग करंट कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना करंट चाहिए। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है बैटरी साइज डिवाइडेड बाय 10। सो हमारी इस केस में बैटरी का साइज 175 एम्पेयर है, उसे जब हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 17.5 एम्पेयर हमारे पास बैटरी को चार्ज करने का करंट आना चाहिए। बैटरी को ज़्यादा जल्दी हम चार्ज नहीं कर सकते, उससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। अगला स्टेप है कि सोलर प्लेट करंट। तो सोलर प्लेट करंट को कैलकुलेट कर सोलर प्लेट टू कैलकुलेट द सोलर प्लेट करंट we have the formula battery current plus home load current. The battery current is 17.5 ampere and home current is 29 ampere. So total is 46.5 ampere. And the next step is calculation of solar plate. So सोलर प्लेट का करंट हम कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें बैटरी चार्जिंग के लिए कितना करंट चाहिए और होम लोड के लिए हमें कितना करंट चाहिए। हमने प्रीवियस कैलकुलेशन के अंदर हमें बैटरी के लिए 17.5 एम्पेयर चाहिए, होम लोड के लिए 29 एम्पेयर चाहिए, तो टोटल 46.5 एम्पेयर चाहिए। ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया है कि हम कितनी सोलर प्लेट यूज़ कर सकें जो हमें तकरीबन 46.5 एम्पेयर करंट दें। So we have to consider the solar plate according to the current 46.5 ampere. So next step is calculation of solar plate. So as we know, the power is equal to voltage into ampere, and then power is, as we know, we have a current of 46 ampere into voltage. So available solar system for 12 volt system, because we are considering 12 volt system. So in market the available solar plates are 125 watt, 150 watt and 180 watt. But in 125 watt the closed circuit current, closed circuit voltage is 12 to 14 volt, 150 is around 16 volt and 180 watt is around 18 to 20 volt. So selection is based on closed circuit current. So in this case we are considering the closed circuit current which is around 14 to 15 volt because our system is 14 volt. दोस्तों इस कैलकुलेशन के जरिए हम मालूम कर लेंगे कि हमें कितने वोल्ट चाहिए अपनी सोलर प्लेट के रेफरेंस से। तो हमें पता है पावर का फार्मूला वोल्ट इंटू एम्पेयर है। वोल्टेज हमें मालूम करना है कि सोलर प्लेट का कितना वोल्ट हमें प्रोवाइड करना है बैटरी सिस्टम और इनको चार्ज करने के लिए। हमारे पास 46 एम्पेयर जैसे पीछे हमने कैलकुलेशन किया उससे निकाला है। हमारे पास 12 वोल्ट सिस्टम है। तो मार्केट में अवेलेबल जो प्लेट्स हैं वो 125 वाट की है, 150 वाट और 180 वाट की है। अगर सोलर प्लेट की हम उसके बैक साइड पे एक सोलर शीट लगी होती है उसे पढ़ें तो हाँ उसका क्लोज सर्किट वोल्टेज 12 से 14 वोल्ट होता है 125 वाट का। 150 वाट का अराउंड 16 वोल्ट होती है और 180 वाट की 18 से 20 वोल्ट है। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट वोल्टेज। हम इस केस में क्लोज सर्किट वोल्टेज कंसीडर करेंगे क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज हमेशा ज़्यादा है और जब हमें उस सिस्टम के साथ इंस्टॉल करते हैं उसे तो वो कम हो जाती है। तो इस केस में हम 150 वाट की सोलर प्लेट कंसीडर करेंगे। Now the next step is selection of solar panel. So the solar panel available in market are 150 watt, 180 watt, 250 watt, 375, 450. Now 630 watt is also available. Now our selection is based upon our design criteria. Our design criteria is based upon 12 volt system which is a single battery system. So here we are going to select either 150 watt or 180 watt because they are supporting the 12 volt system. The 375 and 450 and 250 watt solar plate are just supporting for 48 watt solar system. दोस्तों यहाँ पे हमने कंसीडर करना है कि कौन सी प्लेट मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले 150 वाट की हैं, 180 वाट, 250, 375, 450 और अब तो 630 वाट की सोलर प्लेट अवेलेबल है। लेकिन हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया 12 वोल्ट सिस्टम के लिए है। तो 12 वोल्ट को 150 वाट और 180 वाट सोलर प्लेट सपोर्ट करती है, बाकी 48 वाट सोलर सिस्टम के लिए है।
तो हमारी सिलेक्शन के लिए 150 और 180 वॉट की सोलर प्लेट्स अवेलेबल हैं. So the next step is number of solar plates. So as we calculated in previous step, our total voltage is for 625 watt and the number of plates we selected is 150 watt. So we divide 644 watt by 150 watt and you can see the answer is 4.29, approximately 5, because there are loss factor. We will explain all these kind of factor in next video, so we will consider the 5 plates in this case. दोस्तों यहाँ पे हमने अब कैलकुलेट करना है कि कितनी नंबर ऑफ प्लेट हमें चाहिए. जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया है कि हमारा टोटल लोड जो है वो 644 वाट का है और 150 वाट का हम सोलर प्लेट कंसीडर करेंगे. सो हम 644 वाट के को 150 वाट से डिवाइड करें तो 4/29 हमारी सोलर प्लेट्स निकलेंगी. तो अप्रोक्सीमेटली हम 5 सोलर प्लेट कंसीडर करेंगे क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोड और लॉस फैक्टर हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम 5 वोल्ट की सोलर सिस्टम कंसीडर करेंगे. The next video is about the installation of solar system, safety and protection, series and parallel connections, selection of wire and many other informative videos, selection of inverter, the generator and other many kind of videos. So be with us for the next video. So please like and subscribe my channel and click the bell icon for more videos. Thank you. Please subscribe the channel and support me so that I can make a more informative videos for you.